हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो मैं ना घर पे बैठी थी और मेरे को लगा कि आज पुरुषोत्तम मंथ शुरू हो गया है। और क्योंकि आज सुबह ही मॉर्निंग क्लब में आप बता रहे थे कि इट इज़ वेरी स्पेशल एंड वी नीड टू फॉलो मैनी थिंग्स। तो मैंने सोचा आप भी घर पे हो तो क्यों ना आऊँ और आपसे कुछ चीज़ें पूछूं सो दैट मैं इस अधिक मास को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकूं। और इवन आई थॉट कि हम ये वीडियो बनाएं ताकि अपने वासुदेव कुटुंबकम के सारे मेंबर्स इसका लाभ उठा सके। तो मैं क्वेश्चंस लेके तैयार हूँ आप। Okay, lot of doubts. It's a very good idea, Shivani, because this is such an important month, and we should not let this month pass away without using it properly. Yes. It just comes once in 3 years. In 3 years, Yes, it comes Mataji? once in 3 years. How come? Like why it comes in 3 years? So there is a big historical story behind it. Can you tell me please? Definitely. So I just want everyone to understand why this month is so important and what we can do to fully utilize this benefits of this month. So as Sivani Mataji asked, the first question is why is this month? Comes in like every 3 years. Once in every 3 years. Yeah. So you see, this is called actually Adhika Maas. Another name for this special month is Adhika Maas. Now what happens is, if we see our Vedic calculations, they calculate the astrological information based on the lunar year and solar year. So lunar year means it's the time taken by the moon to start from one point, it goes round and comes back to the point. That is called one lunar year. Okay. That is approximately around 354 days. And then there is the solar year. That is the movement of the sun from the starting point. It goes all around and then it comes back to the starting point. That is called the solar year. So that takes around, we all know, 365 days. Yes. So this, between this lunar year and the solar year, when we see one takes 354 and one takes 365 days, there is a gap. Yeah, almost 11 days. 11 days. The lunar year is kind of lagging behind by 11 days. So because of this lag, if you calculate it every year, by second year it takes around, there's a lag of 22 days. And so by 2.5 years, if you see, 2.5 to 3 years, it takes roughly around a month. Yes. That lag is there by 1 month. So then what happens is all the astrologers, their calculations for Ekadashi Tithi and all those things becomes very complicated. So what they decided to do is this lag of 30 days, they created an extra month. Okay. So then what happens is when that 365 days, then the lunar year and the solar year is completed, the calendars are closed. And then they add this extra 22 to 30 days, and then they open up the calendars again. So then it is completely balanced. Okay. So it doesn't become difficult to calculate the Ekadashis or others, it becomes very difficult. So this extra month that is added is called the Adhika Maas. That's why it's called Adhika Maas. तो मेरे को माता जी के बारे में एक और अच्छी बात पता चली कि वो बहुत अच्छे रहे होंगे ज्योग्राफी में, क्योंकि हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तभी इस तरह के होता है ना कि सोलर ईयर एंड लूनर ईयर। So कुछ नहीं है, because I also listen to lectures only and talk about it. So I also, to know more about all these things, we need to follow the senior Vaishnavas. We need to follow our acharyas. On our own, we cannot understand all these things. So of course, I have taken the guidance from all of them and listened to many lectures and understood it properly so that I can share it with everyone. Yes, Mataji. Yeah. So that is there. अच्छा, एक और चीज मैंने ना बहुत सारे लोगों को खासकर लाइक जनरली पीपल सेड मलमास जैसा लगता है कि कितना खराब है ये मलमास क्यों बोलते हैं, मतलब अधिक तो समझ आया बिकॉज इट्स एन एक्स्ट्रा ईयर, बट ये मलमास ये शब्द ना बहुत जैसे गंदगी को बोलते हैं मल, पर कैसे ऐसे बोल सकते हैं किसी मंथ को? It's very sad that they call this beautiful month, a very auspicious month actually, Malmas. पर ये अभी चल रहा है, it has been happening from so many years together, especially the Karmakandi Brahmins. They consider this as Malmas because this is an added month, right? So there is no Tithi and all in this month.
So they say, अरे इसमें कोई तिथि नहीं है, तो we cannot do anything auspicious in this month. Auspicious, like, auspicious in the sense like अभी शादी करना या हाउस वार्मिंग का सेरेमनीज, कुछ अच्छा सेरेमनीज जो हम लोग करते हैं ना, that is avoided totally by them in this month. So they say this is Malmas because it is not good. We cannot do anything good in this month. अच्छा ऐसा, इसलिए वो मतलब उनकी समझ के हिसाब से वो उसको मलमास बोलते हैं। Because उनको तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज़ें ही देखना है, शादी का मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज क्या क्या कर सकता है वही। लेकिन हम लोग का वैष्णव आचार्य इस मलमास को टोटली रिवर्स करके बोला कि ये मलमास इतना अच्छा है कि हमारे हृदय में जो भी मल है ना, ये महीने में निकल सकता है। यही तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैष्णव आचार्य की जो जनरली लोगों का जो पर्सपेक्टिव होता है वो बिकॉज हर चीज सेंस ग्रेटिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं, और हमारे आचार्य उसमें ये देखते हैं कि हम एज अ भक्त आज उसमें से क्या स्पिरिचुअली क्या बेनिफिट कर सकते हैं। सो they do real study of in-depth study of all the shastras like the Skanda Purana and Padma Purana. इसमें सब लिखा है कि ये अधिक मास का फायदा क्या है। And so many stories are there connected to this month. It's so interesting, and the benefits that we get in this month are also enormous. We just cannot ignore this month. So that's why good Sivani, you just came and we thought we'll share this information with others so that everyone can take the benefit of it. And today is just the starting day, so not much loss is there. They can those who all are interested in doing this vrata in this particular month can start off from today itself or even from tomorrow. Yeah, Mataji, thank you, because you are explaining so well that all of us will be benefited. Maybe like today it's not we lost the day, just day has started, and I think we'll try to share this video with everyone as soon as possible. और माताजी और क्या benefits होते हैं इस मंथ का, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा पुरुषोत्तम मास, अधिक मास आ रहा है, तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं या क्या बेनिफिट्स है ड्यूरिंग दिस मंथ, व्हाट वी कैन फॉलो। सो this month, as we said, is called Adhik Maas, and it is also called Mal Maas because it helps to remove all the anarthas from our heart. That is very important for spirituality, right? So we should try and add in as many spiritual activities as possible. The benefit is that this month is so powerful. Lord Krishna has made this month so powerful. I'll just tell you a small story about this. Yes, please. This how it works is that according to our Vedic Shastras, every manifestation has a personality behind it. Yes. For example, we know the sun. Sun ke beech mein, behind the sun Lord Vivaswan, the sun god is there. Moon is a manifestation, material manifestation, but there is someone who controls the moon, who's the head of the moon, and that is Som Bhagwan, right? So like that for Agni, there is Agni Devta. Like that for every month also, there is one personality who presides over that month. Like January, February, March, Shani. And as far as I know, ये श्रावण मास का जो अधिपति देव है वो शिवा होता है। शिवा होता है। So like that, this Adhik Maas was like an orphan because it was added. Yes. And so there was no one to control it or no one to supervise it. Like an orphan, जिनके माँ बाप नहीं होते वो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। तो actually these months are all represented by a lady, feminine. Okay. So this Devi of this month felt very bad that no one is accepting her. I feel they are all putting me down. They don't want to do anything auspicious, and she started crying. And so she went to Brahmaji and spoke about this. So Brahmaji said, "Okay, I understand your problem. Let's go to Vishnuji." Vishnuji said, "I understand your problem. You have come to Vaikuntha." And in Vaikuntha no one cries. Yes. So I will not allow you to go like that. We will do something. Let's go to Golokadam. So ultimately they went to Krishna, the Supreme Personality of Godhead. हमारे Supreme Personality. Sham.
मोर मुकुट बंसीधारी को वहाँ जाके उन्होंने अपना ये प्रॉब्लम बताया एंड कृष्णा से नॉट टू वरी माय डियर आई एम गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर योर मंथ एंड पीपल विल जस्ट get attracted to you. My name will come to you. So he gave his name Purushottam. His name is Purushottama, right? Yes. So he said your month will be named as Purushottama Maas. Okay, and all my opulences जो भी मेरे में है वो सब ये महीने में आपको मैं देता हूँ. Okay. So that way all the power is given to this month by Krishna. So you imagine how can we call it Malmas? So Mataji, when there is hurry, there is no worry. There is hurry, there is no worry. And beauty about our ISKCON is ki, like for each and every small thing we have explanation. Yes. Because in other places, whenever we go and we ask such question, people will be like, "Arey kya hai? Kar lo bas, just follow it." So you know, like people like me, we are not very satisfied with those things, and I feel कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना है, ऐसे कुछ तो भी बोल दिया और कर लो. So that is the beauty I feel with ISKCON कि जब हम यहाँ आते हैं हमारे छोटे छोटे डाउट्स को भी ऐसे हल्के में नहीं लेते हैं. We have like अभी ठीक है पुरुषोत्तम मास है, मल मास है, कर लो, दान दे दो. मोस्टली सब लोग दान देते हैं, लेकिन क्यों करना है, उसका नाम क्यों पुरुषोत्तम है, कैसे भगवान ने उनको इस प्रकार से दया करी, ये सब चीज. अब जब ये सब हम पूरी तरह से जानते हैं तो हमारा विश्वास और स्ट्रांग होता है और हमको लगता है कि yes I want to follow. एक होता है कि we are doing forcefully because everyone is saying yeah. So दूसरा चीज है कि we understand and do it. उसमें yes. तो बहुत फर्क आता है. In fact, Shastras always are appreciative of this questioning. Yes. You know, if you see Srimad Bhagavatam, it's all about question and answers. Yeah. Parikshit Maharaj is asking questions, and Sukadeva Goswami is answering. Naimisharya sages are asking questions, and Sanaka Rishi, and Sukadeva Goswami is asking. So, even our Bhagavad Gita is question answer with Arjuna. So this question answers is very very important to understand and do things, and that is why ISKCON has taken up this whole thing of explaining everything to the people. तो हम लोग blind faith से क्या होते हैं ना आगे it's not sustainable. When you do something with blind faith, you lose interest in that. But once you understand the importance of everything, then your faith in it increases and you will do it with more enthusiasm. Yeah, and I think इसलिए प्रभुपादा ने all over the world मतलब हर एक ISKCON में like there will be regular Bhagavatam classes and so many classes so that people can go there, they can know about Vedic scriptures and all. I don't think कि दुनिया के और किसी भी temples में मतलब इतना ज़्यादा ये हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स को या भागवत गीता को भागवतम को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है. सो वी नीड टू बी लाइक थैंकफुल टू प्रभुपादा क्योंकि आई थिंक तभी लोग यहाँ जब आते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं तो सब कुछ लोग बोलते हैं कि ये भक्ति वगैरह क्या है कि जस्ट भावना में बह रहे हो. लेकिन ISKCON में ऐसा नहीं है ना क्योंकि बहुत पढ़े लिखे बड़े हमारे जो डिवोटीज हैं मोस्टली इंजीनियर्स एंड I don't know what all background they are coming because उनको वो पूरा डिटेल स्टडी कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इसलिए वो सब प्रोफेशंस को छोड़ के उसमें जुड़ गए हैं. So they say very nice wordings they was giving the other day. I heard someone saying, some senior Vaishnava, we are all, most of us blindly do all the rituals. बिना सोच समझ के हम लोग rituals इसको हिंदी में बोलते हैं माता जी लकीर के फकीर मतलब बस हम फॉलो किए जा रहे हैं. Ritually हम लोग rituals follow करते हैं blindly जो अपने माँ बाप ने शुरू किया हम लोग वही करते हैं और अगर हम लोग पूछ से ये क्यों कर रहे हैं बोले चुपचाप करो बस. You don't worry about it. ये करते रहो ये अच्छा है आपने लिए करो. तो आजकल के ज़माने में बच्चों को they just don't want to do anything blindly. They want to know the reason behind it. So when you add the spiritual reason behind that ritual, then it becomes more meaningful. उसका meaning rituals का जब meaning मालूम होता है then it actually becomes very spiritual. जैसे बोलते हैं कि आम के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना कोई बोलता है ये वो येलो होता है ऊपर थोड़ा रेड होता है बहुत मीठा होता है जूसी होता है दैट इज ज्ञान. लेकिन जब हम उसको खाते हैं और relish करते हैं तो उसका actual realization हमको मिलता है. So that way even this Adhika Maas also I never knew about this thing before. It is only because I'm in ISKCON. In our family also we never were so religious
that we follow so many rituals. So it was totally a new concept for me. But once I come here, when I joined ISKCON and understood about this Adhik Maas, I felt, my God, it is so beneficial. We are fools not to take the benefit and take advantage of this month. So we start reading it, and there's so many nice lectures given by so many of our senior Vaishnavas. So it becomes easy for us to follow this Adhik Maas. And like जैसे आपने अभी बताया कि आपके फैमिली इतने रिचुअलिस्टिक और इतने रिलीजियस नहीं थे और शायद आप इतना ज़्यादा अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आई थिंक वही है ना कि इवन इफ यू आर ब्लैंक, मतलब आप एकदम कोरा कागज भी हो तो यहाँ आके आपने कितना कुछ सीखा और आई थिंक वो पूरी आपकी लाइफ का गोल और मोटो ही चेंज हो गया। तो मतलब यही बहुत आई थिंक ब्यूटीफुल है, मतलब अपना ये ISKCON और प्रभुपाद ने जो भी कुछ प्लान किया है, he has laid a path for us. ये सब करना, अधिक मास फॉलो करना, अधिक मास का कभी अब ऐसे हल्के में मत लेना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। We should know what exactly we have to do in Adhik Maas to get the complete benefit of this month. तो माता जी अब आप मेरे को ये बताइए कि हम बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं आपने जैसा बताया, बट एग्जैक्टली मतलब बीइंग अ गृहस्था और क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रुप के माता जी वर्किंग भी है तो टाइम भी उनके पास थोड़ा टाइम फैक्टर इज देयर बिकॉज वी ऑलरेडी हैव मॉर्निंग क्लब, वेडनेसडे क्लास, थर्सडे भागवतम क्लास, आप सैटरडेज को भी क्लास ले रहे हो, तो उस सारे शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए हम क्या एक्टिविटीज़ बहुत इजीली फॉलो करें और उससे इस बोलते हैं ना जब कोई सेल चल रही है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, तो हम कैसे इस पुरुषोत्तम मंथ का हम फायदा या बेनिफिट्स यू नो लाइक हम ले सकते हैं। हाँ, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर ऑलरेडी वेरी बिजी विद आवर लाइफ, सो वी ट्राई एंड सी व्हाट बेस्ट वी कैन हैव। हम लोग को शास्त्र में तो बहुत सारे चीज़ें करने के लिए कहा है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू everything. First of all, we have to see our age. We have to see how our physical body takes all the vratas to be done. Whether we can do all these things. See the time factor and try to do some amount for starters. First year, if you are following, little bit you start. But what is important is you have to sustain it for the whole month. मतलब जो भी आप शुरुआत करते हैं उसको पूरे महीने के लिए आप करो, ऐसे ही आप। So there are lots of things are there, but you select what you can do, and then you try to apply it in your everyday life from today onwards till the next month end. Okay. That is more beneficial. So we don't have to, you know, oh ये सब बताया and you know अपने एक्साइटेड में सारे कुछ स्टार्ट किए और फिर बाद में क्या आफ्टर थर्ड डे फोर्थ डे एक बंद किया, एक दूसरा ये भी नहीं हो सकता, सॉरी ये भी नहीं कर सकती, अरे ये बहुत मुश्किल है अभी छोड़ ही दो यार, अधिक मास छोड़ ही दो। जैसे एकदम छोटे से बेबी जब वो लोग क्रॉलिंग वो शुरू करते हैं, हम उनको सीधे खाना खिलाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको बड़ा लिक्विड सेमी सॉलिड, तो वैसे ही जो हम न्यू कमर्स हैं या मतलब सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमको फीड कराना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जैसे आप बताओ विच यू थिंक इज लाइक बहुत इजी है जो हर कोई इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। सो द थिंग इज दैट एवरीवन हैज देयर ओन कन्वीनियंसेस, इट्स डिफरेंट फॉर ईच पर्सन, सो आई से ओनली अ फ्यू थिंग्स, द अदर पर्सन मे फील दिस इज नॉट easy for me, but there are some other things which she may feel it's easy. So what I think is I'll just tell you all the benefits, and then we can decide which one we want to that is take, है ना। जैसे हमारी रीना माता जी चैंटिंग चैंपियन है, तो वो चैंटिंग को बहुत इजी ले सकती है, which I can't because for me chanting is very difficult. So इसलिए like जिन माता जी में जो उनको लगता है कि मेरे स्ट्रेंथ्स हैं वो उसको ले लें और उसको फॉलो करें। So as you said, the first point is of course chanting. Chanting is our basic backbone in our spirituality. So, okay, we are all those who are doing 16 rounds every day, they can maybe add in 4 rounds. I'm being very conservative. Those who have the capacity to do more can do more. Yes. If the, you know, you can like do for 3 lakhs. more there is no limits, Mataji. There's no limits. But at least let's do 1 round extra. Let's do 3 rounds extra. अभी मैंने सोचा कि मैं 16 राउंड कर रही हूँ रोज, तो मैं 4 राउंड एक्स्ट्रा करूँगी। अभी ये संकल्प मैंने लिया है। Hopefully I'll be able to sustain this. That is more important. What you can sustain. ये नहीं कि हाँ मैं 108 माला करूँगी, definitely अधिक मास का फायदा उठाऊँगी,
लेकिन अब रोज करना चाहिए, रोज का रूटीन में ये फिट होना चाहिए. अगर नहीं होता तो एक दिन नहीं करेंगे, तो just do what is comfortable for you. Yeah, Mataji, Okay. that's right. So you can decide how much you want to do. You do 16 rounds, so you can also decide what you want to do. You know, तो सब लोग अपने हिसाब से chanting तो हम लोग को करना ही है. That's most important. हाँ, chanting के बाद next आता है कि शायद maybe book reading और scriptures reading. Yes, book readings तो हम लोग को करना ही है. For example, they have said कुछ specific for this month which is like very Yes. beneficial. Yes. See, in Bhagavad Gita there is one chapter 15. Mm-hmm. Chapter 15 is called Purushottama Yoga. Oh, yes. It's called Purushottama Yoga. So this Purushottama Yoga can be read every day. So chapter 15 अगर आप रोज पढ़ोगे, it's very useful. तो माताजी क्या पूरा चैप्टर पढ़ना है या हम सिर्फ श्लोका पढ़ेंगे तो that is enough? श्लोकास पढ़ना. And I think उसमें and I think it has only 20 shlokas. It has 20 shlokas. Maybe Yeah. I'm not very sure. Yeah. Okay. It has 20 shlokas, so you can easily read I the think shlokas. maximum it will take 5 minutes, 5 to 6 minutes. 5 to 6. If we go through shlokas. If you go to, now if you Yeah. have time, if you are not working, you have time, at least you can read the meaning of that. Yeah. It all depends upon our individual No, I'm just saying ability. कि अगर हमको ऐसा लगता है कि ये भी करना है वो भी करना है तो हम short time में अगर हम चाहते हैं तो at least we can complete that shloka in 5 minutes. Yes. And we are completing 15 chapters. And then if you have time at the end of the day, we can go through the meaning. Now like that also, you know, in Srimad Bhagavatam also they say there's one particular canto. I'm not sure which one. Acha, are you talking about Brahma Stuti? Not 10th Stuti, canto. some prayers. Brahma's prayer, 10th canto, 14th chapter. 10th canto, 14th chapter. Yeah. That is also, they say that you should read it. If you read that, it's very, very beneficial for us. Okay. ये हो गया अभी reading की बातें. And of course, whatever else time you have, you can do it. But these, you just try to do it every day. And Mataji, like I was listening to some like videos, like because many videos are there. So they were talking about some ashtakams. So can you tell me? Yeah. So ashtakams are very important here because ashtakam. What does ashtakam mean? Do you know what's ashtakam? Yeah, अष्ट है तो कुछ 8 होगा. और आगे क्या है वो आप बता दो. 8 verses है. Okay. All the prayers with 8 verses are called ashtakam. हाँ. Okay. तो ये महीने के लिए भी. अच्छा तो फिर हमारा जो हम सुबह सुबह गुरु अष्टकम करते हैं संसारा दावन. वो भी कर सकते हैं. हाँ मतलब वो अष्टकम है लाइक एंड देन वो क्या बोलते हैं पूनम माता जी जो करते हैं शिक्षाष्टकम. Yes. Shikshaष्टकam. वो तो luckily we are doing it in the morning, so we are covering a lot of ashtakams. So it's much easier for. So people who are not yet Matajis who are not yet joined our morning club. You see a lot of benefit in joining the morning club. Lot of our activities, spiritual activities are completed by 6:30 in the morning. So we do, as she said, Shikshaष्टकam. We do Guru Ashtakam. We do Guru Ashtakam. संसारा दावन is Guru Ashtakam. Yeah, but we don't do that. Like मतलब Sivani Mataji is doing that no every day. So those who are joining, listening to her, it is equivalent to doing that. So, and I think और भी बहुत सारे अष्टकम है जैसे जगह हाँ वन चौराष्टकम which is like specifically done. This चौराष्टकम is a very very beautiful ashtakam which we must read or listen to it every day. Mataji, why it is called चौराष्टकम? मतलब चौराष्टकम मतलब ये है, इसका कहानी कुछ है कि it's about Lord Krishna stealing. So he's a चोर. अब भगवान जी आपको चोर बुला रहे हैं. So he does everything. His लीलास are अद्भुत, you know. वो चोरी करने के बाद भी सब लोग उनके पीछे भागते हैं. Actually माता जी वो सबका दिल चुराते हैं ना. सबका दिल चुराता है, मक्खन चुराता है, सबका कपड़े चुराते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता. सब लोग उनके पीछे भागते हैं क्योंकि वो भगवान है. वो कुछ भी करे. हम अगर ऐसा करें तो हम लोग को लाठी लेके हम लोग पीछे भागे जेल में जाके. उनके पीछे भागी थी ना यशोदा मैया, लेकिन वो भी कितना ब्यूटीफुल है. Yes. Like so some great devotee has sung this beautiful ashtakam, चौराष्टकम. और उसका meaning और verses बहुत सुंदर है. तो वो भी हम लोग YouTube से लेके we can sing that and recite that, and every day आप करेंगे तो आपको automatically बाहर भी हो सकता है. So that is one thing. So we said we'll do 3 things minimum. कौन से थे हम लोग? माताजी, शिवानी माताजी, are you planning to do all those 3? 3 things मतलब मैं भी सोच रही हूँ कि at least 4 rounds extra chanting I'll do. And चौराष्टकम I'll try to do every day. And और क्या आपने बताया था?
रीडिंग बुक्स तो क्योंकि मॉर्निंग क्लब में हम पढ़ ही लेते हैं स्तुति और स्तुति और मैं ट्राई करूंगी माता जी बिकॉज वही है ना कि हम उतना ही लें जितना हम कंटिन्यू कर पाए बहुत ज़्यादा सोचूंगी और कुछ नहीं कर पाऊंगी इसलिए आई स्टार्ट विद दीज और फिर लेटर ऑन कुछ ऐड करने का मैं ट्राई करूंगी एंड अच्छा माता जी और मैं ये बोल रही थी कि क्या चीज़ें हैं जिनमें हमारा बहुत सारा टाइम किल होता है और जिसके चलते शायद हम इसके लिए टाइम ना निकाल पाए तो हम कौन सी चीजों को I know what you're talking about. Are you talking about social media? Yeah, because I waste a lot of time, scrolling my phone. So, मतलब मैं ऐसा करती हूँ. I'm not saying कि बाकी के आप सब कर रहे होंगे, but मैं अपने लिए पूछ रही हूँ कि ये सोशल मीडिया में मैं अपना बहुत टाइम किल करती हूँ. It's like biggest addiction like nowadays for me. I'm trying to, come out of it. लेकिन वही ना एडिक्शन है तो इतनी जल्दी मैं बोल रही हूँ मेरा भी यही होता है कि when I do too much of spiritual activities then थक जाती हूँ. हाँ वो ऐसा लगता है एक ब्रेक चाहिए और फिर हम वो ब्रेक के चक्कर में वो शुरू होते हैं. ठीक है, doesn't matter, at least we're just using it as a break. It's not like हम लोग पूरा दिन यही कर रहे हैं. माता जी but sometimes कभी वो पता ही नहीं चलता कि वो 1 घंटे का ब्रेक हो गया. मतलब for an hour or more than that like you keep on scrolling and then suddenly कुछ बेल बजती कुछ तो अरे इतना वक्त चला गया तो वो इट्स लाइक बहुत बड़ा मतलब 1 घंटे में वही हम मिल लें वॉक कर लें बातें कर लें वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है rather than वो sitting on sofa and scrolling. No, there are so many things we can listen to, so many lectures, nice lectures in the media. Social media is not totally bad, but it's the way you use it. Yeah, वो तो सही especially in this month we should try and use it for spiritual activities. Yeah, and I think अगर इस month में आदत पड़ जाए अच्छी तो हम बाद में भी उसको follow कर पाएं. So see now how we are using the social media to deliver this message of Adhika Maas. So we cannot totally say no to social media, but yes, we can use it for in the right way. Yeah, वो तो है. So that we avoid too much of calls on this using the phone. Also, it's like something that they have told us is try to avoid prajalpa. What is prajalpa? Means unnecessary talk. जो gossiping करते हैं. Mrs. Gupta, Mrs. Agarwal. Are you talking that? Yes. ये जो हम ladies का favorite. अरे उनका नया हार देखा. कैसे अपने हाथ चमका रही थी अपनी डायमंड रिंग शो ऑफ कर रही थी. तो इसमें हम लोग थोड़ा कम कर रहे हैं. माता जी मैं आपको ना थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि अगर हम आपसे कनेक्ट नहीं होते तो हम अभी भी करते हैं गॉसिप. आई एम नॉट से कि हम प्रजल्पा से पूरे बाहर आ गए बट फिर तो हम 100% वही कर रहे होते हैं. बस अच्छे कपड़े और गहने पहन के आज हमारी किटी पार्टी किधर है हम ऐसा ही करते हैं. बहुत कम हो गया ना. हाँ naturally. I remember when we all were starting, we all had all these sessions, important part of our life. अभी तो automatically हमारा प्रजल्पा because this kitty party is ultimate प्रजल्पा. Yes माता जी ultimate. और मतलब वो थीम्स होती थी. अभी ये सच के जाना उसके लिए शॉपिंग फिर उसके बाद कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे क्या वहाँ का मेन्यू होगा बेकार के गेम्स. बस मेरे को सबसे गंदा लगता है वो सब बैठ के तब बोला मतलब हम जुआ ही खेल रहे होते हैं ना माता जी अल्टीमेटली. और वो बात नहीं जो 4 प्रिंसिपल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है वो गैम्बलिंग नहीं करना है और वो बड़े खुश होके कर रहे कि हमने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया और वो जीत के आते तो ऐसा लगता है कि कुछ वर्ल्ड कप जीता है. It's like one hub for talking about people. Yes. ये किया वो किया मिलते. We wait for the kitty party day when all of us will get together and then बातें करें इसके बारे में उसके बारे में. मतलब जितना मतलब गॉसिप आई थिंक कि उसका नाम किटी पार्टी नहीं गॉसिप पार्टी होना चाहिए ना. खैर ठीक है. हाँ तो हम लोग फिर भी मतलब उतना को छोड़ने के बाद भी वही बोलते हैं ना कि हमारी जो कंडीशनिंग क्योंकि स्पेशली बीइंग अ फीमेल या मेरे को लगता है मेल भी करते हैं प्रजल्पा लेकिन ठीक है लाइक पर स्पेशली हम वुमेन के केस में ये बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या कंडीशनिंग है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं और हम इवन डिवोटीज के बारे में भी होता वो नहीं होना चाहिए. That you should take care of because वो एक पाप होता है. हाँ वो एक तो वैष्णव अपराध होता है. So ये महीने में even if you feel something strongly about someone, let's not make it into a conversation. Just don't talk about it because the sins that we commit, Vaishnava aparadha that we commit in this month is also magnified and multiplied 1,000 times. So we should
this is a very good month to, we should try and control our talking freely, loosely talking जो हम लोग करते हैं ना वो थोड़ा control में रखें, not talk too much about other people, but instead use that time to do some spiritual activities, talk about that, discuss with everyone. Harikatha तो इतना अच्छा चीज़ है, we can discuss at length and go on and on talking. So use our time for that. Instead of talking about, as someone said, right? You were telling me this before the camera was on. Average people talk about. वो श्री भगवान केशव प्रभु was saying कि जो बहुत ही मतलब लोगों का 3 grades होते हैं. Some people talk about people only. Some talk about events. Average people talk about people. Not average, low. Yes, the lowest. The lowest kind of people talk mostly about people, and we go to next higher grade. They talk about events. But the people with the highest level, they talk about things of wisdom. So in this month, we should try and touch that level. वो जो होता है ना कनिष्ठा मध्यम और उत्तम अधिकारी. So try to, whichever level we are, try to upgrade yourselves to the next level. So we need to evaluate ourselves. हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं ना, as per what the shastras are saying, are we trying to follow that to some extent at least in this month? Okay, so then of course there are many other things which we can do, very simple things, it doesn't take time. One of the things is offering obeisances. Okay, that is also very important thing and very powerful. If you offer obeisances every day once, try to offer obeisances 2 to 3 times, like in afternoon when we are offering. Offering well is offer in the night before going to sleep. Lighting a ghee lamp. Like in Damodar month. Like in Damodar. We light the lamps with oil. Instead use ghee and light. So lighting a ghee lamp is very auspicious. Then one very important thing is, try to control something that you really like. Most difficult for me. There is something that your tongue is craving for. Like मेरे बारे में मैं बोलूँ तो I have decided, I don't know how far it will work, but I have this solid craving for sweets. हाँ, क्योंकि आप सात्विक गुण से भरे हो. पता नहीं कौन सा गुण से भरे हैं, लेकिन ये जो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है. Every day after every meal I have to eat some sweet and in between also. Sweets, more sweets day to day. So that you can become more sweeter and sweeter. So now I'm fatter. No, Mataji, no one can compete me in that. So it's not only about getting fat; it's also about increasing your sugar levels in the blood and a lot of health problems. That's so at this age, I have to try and control that. So this is my. So you all are going to eat sweet during I this hope month. so. Please pray for me. Oh yes, Mataji, sure. Like in fact, Sivani just told me that I have not brought Kaju Katri for you because there was some lying in my house and I wanted to bring it. Then suddenly she remembered I am going to take the sankalp of trying not to eat sweets. So like that we help each other, you see. Yes, माधुजी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी है. हम अकेले बोलते ना कोई भी जर्नी में अकेले थोड़ी दूर जाके थक जाएंगे, लेकिन जब हमारे साथ काफिला है, मतलब पूरे लोग हैं, तो हम बहुत लंबा जाएंगे. तो सबसे आपको जो अच्छा लगता है ना, sacrifice it for God. That you don't take it during that month. Okay. So what about you? What do you think you can do? माधुजी, I'm thinking कि मैं अभी भी बाहर बहुत खाती हूँ. Like जब मौका मिल जाए, जैसे स्पेशली आप सबको पता होगा दीपिका और मैं दोनों ही बहुत फूडी हैं, और अभी भी हम वो मेरे लिए अभी भी ऐसे प्लेसेस ढूंढती है कि जहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक का फूड अवेलेबल, और हम जाते हैं. तो और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी आज की जो कैमरामैन और वीडियो रिकॉर्डिंग दीपिका माता जी कर रहे हैं, जो हमेशा पर्दे के पीछे होता है. तो मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ मैं बाहर का नहीं खाऊं. unless it's very urgent, I'm traveling और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को शायद खाना पड़ेगा. बट अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी कि ड्यूरिंग दिस मंथ मैं बाहर के खाने की जो क्रेविंग है, मतलब उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ, और लॉन्ग रन में उसको और ज़्यादा मैं बोलते ना हमको क्रिश्चियन फूड खाना है, हमको वेजिटेरियन भी नहीं खाना, तो मैं उससे थोड़ा ऊपर उठना चाहती हूँ. I remember some of my aunts when they also wanted to give up something.
ये महीने में हम लोग को कुछ छोड़ना है, हाँ। तो वो लोग जो उनको अच्छा नहीं लगे ना वो छोड़ देते हैं। वही तो है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में यहाँ फिर भी लगे वो होते लोग हैं। say they like what is it, paneer and things like that, but they say I will give up बैंगन this month. सब दीपिका माता जी, आप क्या छोड़ने का सोच रहे हो? मैं मीठा छोड़ने का सोच रही हूँ। सच में जब माता जी ने बोला कि वो तब मुझे भी लगा कि हाँ मेरी सबसे बड़ी वीक पॉइंट हाँ। मीठा देखते ही मतलब सब कुछ भाड़ में जाओ, मतलब मुझे पहले मीठा दे दो, ठीक है। Yes. ओके अच्छा, मैंने तो माता जी को इतने क्वेश्चन कर लिए, और क्योंकि दीपिका आप तब से सुन रहे हो, तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं क्या माता जी के लिए? आप कुछ बोल रहे थे। हाँ वो उस टाइम पे मैं सोच रही, लेकिन माता जी ठीक है, मतलब कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हम कुछ पॉइंट में बहुत वीक हो जाते हैं कि अब जैसे मीठा देखते ही कहीं पे भी हो, उस टाइम पे कुछ नहीं मिलता तो हम लोग मीठा, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? मैंने सोचा है, हाँ। मैंने सोचा है कि मीठा तो मेरे को आएगा ही, वो अर्ज तो आएगा ही, Yes. so I'll keep some dry fruits, डेट्स रखो, फिग्स रखो, और कुछ फ्रूट्स जो बहुत मीठे Fruits हो, जो जो बहुत आपकी sweet. उस क्रेविंग को satisfy raisins, करें। you know, raisins and dates Yes. can actually kill the craving. But ये है कि बार बार हम लोग को खाने से वो बोर हो जाता है, but let's try. Yeah. And also ठीक है, थोड़ा जैगरी का पीस रखो मुंह में, जैगरी का पीस, it's not a नेचुरली मतलब जो मीठा है वो खाओ, मतलब ऐसे आर्टिफिशियल हाँ, वाला अभी जैसे नहीं। फ्रूट्स में भी मीठा है ना, तो वो हम खाएंगे। अब जैसे जैगरी का ये बोल, मतलब जैगरी का मीठा बनता है तो वो जैगरी का ही तो मीठा हुआ, ऐसे मतलब I am saying some sweet. We used to eating sweet. Daily we don't eat jaggery. Daily we eat some payasam or we eat some barfi or some halwa. उसमें जो जैगरी और शुगर डालता है उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है। वो तो कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग इतना भी ये नहीं करना चाहिए कि we cannot maintain it. Yeah. We cannot sustain it. आएंगे क्रेविंग्स, अचानक ओवरनाइट हम लोग बंद करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो कीप दिस ऑप्शंस, बट एटलीस्ट वी आर नॉट ईटिंग दोस सॉलिड। तो माता जी मैं क्या ऑप्शन रखूं? मैंने जैसे सोचा बाहर नहीं खाऊंगी, तो फिर मतलब हम जस्ट आस्किंग कि जैसे मैंने सोचा है कि वैसे तो मैं ऐसा नहीं है कि एवरी डे वी गो एंड इट इज लाइक ऑलमोस्ट ईट इन योर फ्रेंड्स हाउस। या ओके, सो माय फ्रेंड्स हैव टू मेक समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी, ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों के लिए काम पड़ेगा। और दूसरा चीज है कि हम लोग रोज बाहर नहीं जाते। Yes, स्वीट्स तो रोज खाते हैं हम लोग, तो उसमें ज्यादा ऑस्टिरिटी है, बट इवन फॉर हर लाइक आई थिंक योर्स इज ईटिंग राइस एंड कर्ड राइस स्पेशली एंड दाल सब्जी या तो हेल्दी है, बच्चे का सब क्या? चीज तो हेल्दी बच्चे का है क्या करना? तो so that you decide. Yeah. Okay, we don't want to tell that you do this, do that. Yes. You have to decide for your own good. मैं Yeah. क्या I have to control myself in what. That you have to do. Okay. Yes. So then what और else माता is जी there? मैं ये पूछ रही थी कि हम जैसे हमारे लिए तुलसी महारानी इज वेरी इम्पोर्टेंट, तो क्या तुलसी सेवा भी इस मंथ में मायने रखती है? मतलब वो भी कुछ बेनिफिट? तुलसी सेवा तो जरूर करना चाहिए. Every day you have to offer a lamb to tulsi, and also if possible try and take the pradakshina 4 times every day while you sing the tulsi aarti. Okay. Okay. Then serving Vaishnavas. Yeah. Very important to this month. So you organize satsangs, you invite people home. And that's why we have started already now, Mataji. We have planned to invite Gaurgopal Prabhu this Friday. Yes. So otherwise you call someone. पर माता जी जैसे बहुत सारे माता जी जिनका कि we are very fortunate कि we have a group and we can invite Prabhuji's for kirtan. But those who are staying alone and they don't have a group like this, so how they can serve Vaishnavas? They can go to the temple and give the brahmana something there. Or if they know some devotees, see everyone who is a devotee of Krishna is a Vaishnava. Yeah. So you can give them something, some prasad, and make some prasad and give them. Somehow there will be an opportunity for everyone to do Vaishnava Seva in their own situations. So you should just keep in mind, okay, what will do, like. But in our situation, what best we What can do, best we we have to can do. do. Yeah. Okay. And something Gau Seva is also like. Go Seva also you can do. Of course, these all requires extra lot of time and all that. Yeah. But But definitely. Mataji's Go Seva is very- like Mamta Mataji's, for her like I think that She goes every day, I गौशाला is think. nearby, so Yeah. she goes She every day. goes every day. So जिनके भी घर के आसपास अगर गौशाला है तो You can go and Yeah. offer some cucumbers, some tomatoes, and all that whatever, stuff. like they can make some roti also. Roti And also, and Yeah. Go Seva is important. And I was just going through and making a list of all these things. Tulsi Seva we did.
offering obeisances we have done, and preaching. Most Preaching the important. message, yeah, preaching the message of Krishna is very, very important. So that also we have to try and do. So माता जी, like just a small thing, मैं ये नहीं बोल रही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, हाँ. आप अगर अपने जान पहचान वालों के साथ ये शेयर करोगे तो ये भी प्रीचिंग ही होगी. Yes. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है, ये नहीं कि हमको बड़ा फेमस होना है यूट्यूब पे, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमारे आपके जैसे लोग जो आम, जो कोई ऐसा कि भाई हमने घर बार छोड़ के हम साधु बन गए, हमारे हम भी गृहस्थ हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं, तो हमने इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप जिनको भी जानते हो, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, आप अगर स्कूल में टीचर्स हैं तो बाकी टीचर्स को, उनके साथ भी आप ये वीडियो अगर शेयर करोगे तो इट्स प्रीचिंग ओनली ना माता जी. Yes, very true. या That's a very good idea. प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस तरह से भी प्रीचिंग कर सकते हो और आप ये जरूर करो. Then some people even sweets पे हम लोग curtail किया है, control कर सकते हैं. Some people, you know, they even have only a meal per day. Oh. Okay, so like lunch is a heavy meal, have your roti, sabzi, dal, everything, and then the other meals you can go light, like you can have fruits in the breakfast time, and then for dinner you can have curd and vegetables or soup. Like basically we can avoid grains. Yeah, Like जैसे हम that's heavy. It's एकादशी like a में. meal. Yeah. When you add grains in it, then it becomes a meal, like roti, sabzi and all. You just go lighter. So that's good physically, health-wise also. At the same time, you are giving up. You are actually trying to improve your sense control and all these things, which is very important for spirituality. यही आई थिंक हमारा जो पूरा वैदिक कल्चर की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर चीज के पीछे कुछ साइंटिफिक है. मतलब हमको सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ब्लाइंडली फॉलो करें, इसमें भी हमको अगर हम किसी तरह एक मील अगर हम ले रहे हैं और बाकी टाइम हम फ्रूट्स और लाइट फूड ले रहे हैं तो हमारी एक महीने में हेल्थ कितनी इंप्रूव होगी, हमारा एनर्जी लेवल्स और हाई हो जाएगा. जो मंदिर की परिक्रमा शायद हम 15 मिनट में करते थे, या जहाँ हम वॉक करके जा रहे थे वो हम और अच्छे से कर पाएंगे. So it's not only spiritual benefits, there's a lot of physical benefits, health benefits involved in it. So it's a win-win situation, you can say. हर तरह से you will benefit from all these things. So try to add in all this. Andhra Prabhu, the great devotee who was a जिन्होंने वृंदावन में 24/7 कीर्तन शुरू किया था, उन्होंने he used to have only one meal a day, and he used to have it only at sunset. So the whole day he would be kind of fasting. And even during this month specifically, Matajis, I want to tell you, there are 2 Ekadashis coming. Yeah. So these 2 Ekadashis also you can try to do a little bit better than what we used to do regularly. What we do regularly. So if possible, if your health permits, and you don't get a migraine and all that stuff, then you can try to do Nirjala Ekadashi. If that is not possible, you can take fruit juices and fruits. If that is not possible, you can take vegetables which are allowed. So like that, we just do little bit of effort if possible. There's no point in doing it. Oh, I'm falling sick. Yes, Mataji. Like I was about to ask that because I've seen many people like they try to follow like without water or I'm not take food and whole day they just lie down. And some people even go to watch movie कि मैं भूल जाऊंगी कि मेरा व्रत है. मतलब इससे मतलब नहीं है. The whole purpose is use that time for Krishna. So if your health doesn't permit you, don't do it. Yeah. Okay. It's no point in just having a headache or feeling faint and all that and just lying down. Oh, but I have to fast. इससे क्या फायदा? एक्चुअली माता जी वही है, उपवास का मतलब होता है कि हम भगवान की ओर पास हैं, पर हम ऐसा फास्ट करके कि हमारी तबीयत खराब हो जाए और हम सोए हुए पड़े हैं, हमने कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं की, तो ऐसा फास्ट तो करके कोई फायदा नहीं. Totally taken into consideration individually. What each person can do and what level you can take it further. बिकॉज माता जी बहुत सारी चीजों में हम एक दूसरे को देख के कॉम्पिटिशन या इन्फ्लुएंस होते हैं कि अरे वो ये सब कर रहा है. हमारे ग्रुप में जैसे वेनुरति माता जी हैं जो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटीज इस तरह की कर सकती हैं. मतलब मैंने ड्यूरिंग कार्तिक भी देखा है, वो शायद एक टाइम ही खाते हैं और एवरी एकादशी शायद वो सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं. तो अब वही है कि कुछ लोग उनको देख के अगर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर, पहले हमको ये देखना है कि हमारी हेल्थ उस चीज को परमिट कर रही है क्या, और वो करने के चक्कर में ना ही हम चैंटिंग करें ना ही हम बुक रीडिंग करेंगे तो ऐसा करके कुछ फायदा नहीं. So there has to be some spiritual addition in it.
Yeah. fasting and all. Otherwise the fasting is of no use. हाँ बट बेसिकली हम जो समझते हैं फास्टिंग का मतलब बस खाना नहीं खाया तो बहुत बड़ी फास्टिंग है पर एक्चुअली फास्टिंग It's का not मतलब successful Yeah. if you just do that. So you Yes. have to make sure that you add Krishna consciousness in your fasting. And in earlier times, devotees wouldn't cut their hair during this during this अधिक month, Adhik Maas. They wouldn't Okay. cut their hair, they wouldn't cut their beard, उसके पीछे क्या and they reason wouldn't था? cut nails. अच्छा मेरे को तो नेल कल ही कट करना चाहिए था फिर बहुत बड़े हो गए So the reason is, it's very simple, logical reasoning है. Those times they used to chant a lot. ओह टाइम वेस्ट हाँ, time waste. You know, अगर आपको दाढ़ी ठीक करना है and shave करना है, ये सब करना है तो time लगता है. You have to spend at least around 30 to 40 Yeah. minutes for all that. Yeah. And the person who is doing 3 lakh names of chanting, that is a big time block for him. So, of course, in ISKCON they tell us, you are going to preach now, you please shave and be clean and neat and then go, because people will not accept you if you are, you know, Yeah, with a full Babaji. grown beard and Babaji kind of looks. And हाँ क्योंकि प्रभुपाद भी हमेशा इसलिए एकदम क्योंकि मोस्टली You have किसी to भी be संत को देखो presentable. तो वो बहुत एकदम दाढ़ी बढ़ा के लंबे लंबे बाल तो प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं किया yeah, you have to be presentable because ours is a preaching institution. yeah. So whatever it is, you have to be clean shaven for the men basically, and then you know, your hair also should not be too long and all that. You don't let it grow widely during that month also. Of course, in olden days, those sages would do that because of this particular reason, that they don't want to waste their Time. time. ओके ओके हाँ मतलब मेरे को वो भी लगता था इसमें हेयर कट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है आप पागलपन या दकियानुसी लगता था पर हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो 30-40 मिनट्स मतलब उनके लिए हर एक मोमेंट का कितनी वैल्यू है Value. कि वो 30-40 मिनट भी उसको वेस्ट नहीं करना चाहते मतलब वो बोलते हैं ना ये मानुष जन्म इतनी आसानी से नहीं मिलता जो हमारे बड़े लोग बहुत अच्छे से समझते थे पर हम उसको भूलते जा रहे माता जी और क्या हमको जो मन में आए वो हम फॉलो कर ले या फिर हमारे गुरु जो हमको बताते हैं वो हमको फॉलो करना है जैसे अब हम अपने दीक्षा गुरु से तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं और हम आपसे ही कनेक्टेड हैं तो क्या हम अपने मर्जी से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ और वी शुड ऑलवेज कंसल्ट विद आवर शिक्षा It is better to consult because sometimes because your Shiksha Guru knows you quite well and you are interacting with that person regularly, so they will know exactly what you can do. And some advice from some senior is always very good. Yeah. Rather than we just decide on our own, that is also okay. No problem. We know No, what but- is our strong points. Yeah, that is okay. You said. Discussing and finalizing things is also a good thing to do. Yeah, so because I have this fortune and opportunity that my Shiksha Guru Mataji is here with me. So can you suggest something for me like which you feel I can do during this month and make this month matlab for me and for everyone a grand success or you know more fruitful I mean to say. So as I said, let's go very conservatively, let's not try to hit the rooftops. So if you're chanting 16 rounds Mataji, you can do some 3-4 rounds. Supposing someone is chanting only 5 rounds a day, they can increase it to 7 rounds. Yeah. Like that, you just increase a little bit. Percentage. Percentage wise. Yeah. Okay. Then as I was telling, we can offer obeisances. That is also very easy to do. We can just control we can give up some particular favorite item of ours. Yeah. So that is an option. It's only for 1 month. Let's try and see how it works out for us. Then the reading of the chapters, saying the prayers, all that will hardly take 5 minutes or even 3 to 4 minutes. So we can easily add all these things. Charity, you have to give charity to people, to worthy people. Charity to Vaishnavas, charity to Brahmanas. Okay, that is also very important. It will all help you. So we have discussed a whole lot of points, and then you can consult with others and then also decide what you want to do. Of course, you need to start doing it from today. So Yes. don't waste any more time, Matajis and all the others who are watching this. Please take maximum advantage of this month and decide what you want to do, and then try to maintain this for the end of this month so that you get full benefit. Yeah, thank you so Yes. much, Mataji. And like we have, I think, discussed about do's.
Would you like to share some don'ts which we should not like? We discussed some prajalpa. Yeah, prajalpa to you discussed. हाँ. Something else which you feel ki unknowingly we are doing, with unconscious mind we are doing few things which we are not supposed to. What comes to my mind immediately is that Vaishnava aparad. Okay, so we may not consciously try to hurt some Vaishnava, but then we have to be very careful in how we talk to them, and we may get into an argument. Even Yeah. that also should not be there. Just stop arguments. Okay, let's accept it, let's keep quiet, because we don't know where that argument will take us to. And it may just cause a lot of misunderstanding with Vaishnava. And Vaishnava aparad, Krishna never tolerates. He doesn't Yes. like us going against Vaishnavas. So that is one thing that we should try to avoid. Do you have anything else in mind, Mataji? दीपिका माता जी, do you have any question? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ पूछना? नहीं, अभी आपने इतना सारा भी बोला कि ये सब करनी चाहिए। अब जैसे कुछ लोग डेली मतलब तुलसी के लिए दिया जलाते हैं, तो उनके लिए तो ये मतलब ये नहीं है ना कि मतलब वो एक स्पेशल नहीं होगा। हाँ, तो उस वो तो मतलब करते कुछ हैं। चीजें हैं कि मतलब जो लोग रोज डेली उनकी रूटीन में होता है, मतलब कुछ साउथ इंडियंस डेली तुलसी को मतलब दिया दिखाते ही है, मतलब नॉर्थ साउथ जो भी है। और जैसे कुछ चीजें नहीं होता है तो वो कंपलसरी कुछ भी नहीं है, हमसे जो होगा वही ऑप्ट करना है, वही मतलब बोलना है। Yes, तो जो अच्छी चीज हम कर सकते, जितना हम कर सकते उतना। अभी इतने सारे पॉइंट्स हम लोग ने अभी डिस्कस किए, इसमें से आप देख लो कि आप जो नहीं कर रहे हैं और वो आप ऐड कर सकते हो अपने ये मंथ में, वो आप कर सकते हैं। जो कर रहे हो वो तो कंटिन्यू करो, प्लस कुछ चीजें ऐड कर लो, और ताकि लाइक यू नो। और माता जी, आई वाज थिंकिंग, आई डोंट नो लाइक वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, can we have like everyday session of almost 1 hour or so, if possible for everyone? Like we can do 4 rounds of chanting together. We can read 15th chapter of Bhagavad Gita. We can do Chaurashtakam. We can read, even Nandanandashtakam is also there. Yes. So few things, at least for half an hour or something, if like we can be there together for some, like if we can ask everyone Devotee and some association is there. common time, because few things are there कि जब हम अकेले करते हैं थोड़े दिन बाद अच्छा कर लेंगे, अभी नहीं तभी नहीं, और वो मिस हो जाता है। तो क्या is it possible? Definitely we can think about it, Mataji. We can discuss offline, and then we can finalize something and come up with some suitable timing and what all we can do. Yeah, because for me afternoons are more suitable. I don't know about other Matajis, those who are working, so the time should be common for Yes, we us. will discuss this matter in detail later. So thank you so much, Mataji, for enlightening us with so many new things about Purushottama Thank you Month. so much for asking all the right questions, and I thank God that He was able to give me the right words, the right to come out at the right time, so that we can help each other. I hope all the viewers are also able to gain something from this session of ours, and happy Adhika Maas to everyone. Thank you so much, Mataji, and I hope कि in near future हम ऐसे बहुत सारे videos लाते रहेंगे, so that हम सबको और ज़्यादा चीज़ों के बारे में मालूम चले डिटेल में, और हम उसको दिल से एक्सेप्ट कर पाएं और फॉलो कर पाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल, हैप्पी पुरुषोत्तम मंथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।